एक्सीलेंट. अस्सलाम वालेकुम. आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है. I'm very excited to welcome you all and very excited to have you all here as part of this live event and on this YouTube live. My name is Saad Hamid and I'm part of the developer relations team at Google and I'll be your host for today. I hope आप जहाँ भी हैं you are safe and healthy and that you're with your loved ones. The past few months have been very challenging for all of us. And this time has shown us how technology can bring a great opportunity for students. So today's event is all about celebrating students all across Pakistan. It doesn't really matter where you are. आप कहीं भी हैं, आप हमें देख सकते हैं, आप हमें सुन सकते हैं, and आप हमारे event को attend कर सकते हैं thanks to technology. So do not forget to share this event with your fellow students so they can learn and get inspired. So let's get on with the show. First, I would like to introduce our chief guest for today. Start the event, I would like to invite our chief guest, who is Major General Azeem Bajwa, जो कि Pakistan Telecommunication Authority के chairman हैं, and he would say a few words with us. Sir, we are honored that you've taken time out of your busy schedule to join us. As a leader in Pakistan's technology and telecommunications sector, we look forward to hearing your perspective. Thank you again so much, sir. Your presence is deeply encouraging for us and our graduates that we have here. Over to you now. Mr. Farhan Qureshi, head of South Asia Markets, Google, the entire Google team, graduates of the program, and the wider audience sitting across the screen. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. It is indeed a pleasure for me to speak on this virtual graduation ceremony where a lot of young audience and future entrepreneurs have gathered. I would like to thank Google for affording me this opportunity and also for being flexible with the schedule due to my certain unforeseen commitments. I'm particularly happy with the fact that despite the recent challenges of social distancing and restricted movements due to COVID-19 pandemic, our digital infrastructure has been resilient enough to keep us connected. At the outset, I would like to congratulate the graduates of this fantastic program called CloudSeekho. The entire Google team deserves a round of applause for carrying out such a good effort to bring digital skills to the youth of Pakistan. I believe there are 350 graduates, but the platform has more than 5,000 plus registered student developers from across Pakistan. That signifies the success and outreach of this program. Ladies and gentlemen, Pakistan is at the crossroads of digital revolution that will transform the way we live, work, and socialize. Our digital landscape offers enormous opportunities for growth, innovation, and jobs. In Pakistan, PTA and the service providers are making a concerted effort to increase our broadband penetration. As we speak, there are more than 168 million mobile subscriptions with almost 85 million broadband connections. More than 80% of the population has subscribed to telecom services across Pakistan. We have multiple undersea and terrestrial optical fiber cable links with the rest of the world, and we're rapidly expanding our national backhaul. I believe that the expanding infrastructure must be capitalized by the innovators, thinkers, and developers by creating applications and services that solve local problems of the users in Pakistan and also globally. We have a huge talent pool of English speaking developers, more than 90% of whom are under the age of 35, so a very young population. The startup ecosystem is also moving towards maturity, and the incubation centers at the national and provincial levels are doing a very good job. We've already seen a glimpse of our youth's potential, whether it is freelancing, software development, or content creating. We have inspiring stories like that of Arfa Kareem
and Aksa Kausar, who's the first female Google developer expert in machine learning and also graduate of this program. I see a lot of opportunity for the youth to take advantage of this rising entrepreneurial culture and become self-sustained. I'm sure that most of you already know more about cloud computing and its applications. In Pakistan, government and private bodies offer cloud services and they're rapidly growing. In terms of government support, Ministry of IT and PTA is in the process of formulating Pakistan's first cloud policy under e-commerce policy framework. PTA, the regulator, will continue to play its role in these important developments. Ladies and gentlemen, at this point, I would also like to appreciate the role of Google for conducting very useful program like CloudSeekho that trains our youth for new soft skills of the future. Google has made substantial efforts through investments in partnerships, people, and programs. I hope that Google will enable a new generation of Pakistani small businesses, application developers, and content creators to reach new audiences and generate more value for the digital economy. I hope our youth will benefit from such programs. In the end, I would like to speak to the youth specifically. I want you to know that the future of Pakistan depends on your talent and hard work. As a nation, we are full of passion, talent, and wisdom. We just need the right environment and opportunities to make full use of this potential. Programs like CloudSeekho are a stepping stone for you to take the leap into future technologies and be a role model for others. Keep inspiring us with your grit, hard work, and determination. I assure you that Government of Pakistan and Pakistan Telecom Authority within our ambit will continue to strengthen the foundations of this digital transformation and encourage you to be creative, positive, and innovative. I wish you all the best for your future endeavors. Thank you all. Thank you, sir, so much for being a part of this, taking out the time. Thank you. So that was a very kind message. We thank Major General Amir Azeem Bajwa, the chairman of the PTA, for taking out the time and sharing that message of inspiration with the youth of Pakistan. Next up, we have Farhan Qureshi, who's the head of South Asia markets for Google, with his keynote on Google for Pakistan. So over to you, Farhan. Assalamualaikum. I hope you guys can hear me. आवाज आ रही है सबको? Okay. First of all, thank you very much, Chairman Saab. I think some of the comments that you made are very heartening for all of us to hear. पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा टैलेंट है और हमें बड़ा फख्र होता है जब हम अपने रीजनल ऑफिसेस के अंदर पाकिस्तान के टैलेंट के बारे में बात करते हैं. And the talent is really you guys. I think such a lot of tremendous work is happening. And I just wanted to acknowledge that. And then also I wanted to take this opportunity to explain to you कि यार पाकिस्तान के अंदर हम as Google और क्या काम कर रहे हैं. So anyways, without further ado, I know आज बड़ा ज़बरदस्त event है. मैं बहुत खुश हैं हम लोग सारे that we are doing this first graduation ceremony. Ideally, as Saad has said, I would have loved to be on ground. मुझे बड़ा मजा आता है. Actually, this is the my most favorite part of my job is to be able to get inspired with the talent that we see, the younger folks around us who are doing like really tremendous things. Moving forward, COVID की वजह से दुनिया काफी बदल गई है. I think पिछले साल इसी टाइम के बारे में अगर हम कभी सोचने की भी कोशिश करते कि इस किस्म का वक्त गुजरेगा, I don't think we would have been able to expect it, right? So I think the world is very different. And although social distancing and a whole bunch of things have separated us, but there are so many initiatives that companies are taking, governments are taking to bring us together as well. उसके अंदर ऐसी जैसे बाकी कंपनियां भी कर रही हैं, गूगल अपनी तरफ से बहुत सारे काम कर रहा है, जिसके अंदर हमने कोई तकरीबन अपने ओन प्रोडक्ट्स के अंदर 200 के करीब
नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं या फीचर्स लॉन्च किए हैं या इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। उसके अलावा दुनिया में हमने कोई $1 बिलियन के करीब फंडिंग का भी एडवर्टाइजिंग ग्रांट्स की सूरत में ऐलान किया था। तो there's a lot of wonderful stuff that we've been doing. I'm going to go through some of the details. When as a technology company providing information, I think one of the most important expectations from us, from our users, is कि अगर वो इंटरनेट पर जाएं और हमारे पास आकर ढूंढें तो उनको सही इंफॉर्मेशन मिले पहली बात, और उसके अलावा उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले। तो इसके ऊपर बहुत सारा काम किया गया है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे, अगर आप जाते हैं, अगर गए होंगे इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, इनिशिएटिव्स हमारे देखे होंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको नजर आई होंगी, जिसके अंदर यूट्यूब के होम पेज पे आप जाएं तो आपको अपडेट्स मिलते होंगे। इंफॉर्मेशन पैनल के अंदर यूट्यूब के ऊपर हमने इंफॉर्मेशन शेयर की है कोविड-19 के ऊपर। SOS अलर्ट्स हमने इंग्लिश में और उर्दू में भी शेयर किए ताकि लोगों को सब पता चले। उसके अलावा हमने कोविड-19 की एक माइक्रो साइट भी डेवलप की थी पाकिस्तान के लिए, जिसके अंदर आपको कोई सिम्टम्स हो, प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं, ट्रीटमेंट्स पे क्या हो रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके गवर्नमेंट की साइट से पिक की थी और लोकली प्रोवाइड की थी, जस्ट टू मेक श्योर कि हम ऐसी कोई चीज ना शेयर कर रहे हो जो मिस इन्फॉर्मेशन में आ सके। सो दैट्स वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स दैट वी हैव डन रिसेंटली। उसके अलावा देखें, काफी लोगों की रोजगार, काफी लोगों की इकोनॉमिक्स खतरे में आ चुकी हैं बिकॉज ऑफ कोविड। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि मुल्क में, दुनिया के अंदर इस लेवल का ऑब्वियसली पैंडेमिक बहुत बहुत सदियों के बाद आया है, लेकिन अगर हम कुछ साल पहले जाएं, 15 से 20 साल पहले, तो एक और था छोटा, जो एक और भी एपिडेमिक था, जो था सार्स, जिसने अबाउट 5 मुल्कों को अफेक्ट किया था। वन ऑफ द की लर्निंग्स दैट वी हैड फ्रॉम दैट इंसिडेंट वाज कि there are companies that will grow, and then there are companies, if we don't evolve, will not grow so much. And some of the key learnings that we realized was that this technology is a real big enabler, and to be able to continue that enabling process, it's very important for us to help upskill businesses. So one of the greatest initiatives that we really did very recently as part of a local effort in Pakistan was we created a Google a program jiske andar we taught a number of these SMEs, 4,300, about how to bring their businesses online, and then how can they, utilize this digital platform to be able to grow their business. उसके अलावा हमने, क्योंकि हमें पता था कि बहुत सारे लोग घर पे हैं और will not be able to go out or learn more and more, so we created this Google Grow with Google piece as well, जिसके अंदर आप जाएं तो there was a number of things, उसके अंदर बहुत सारे resources थे for all kinds of people that we did, right, जिसके अंदर information about how to upskill yourself, education के हवाले से, all of that was available, including some of these webinars that we did along with Ministry of Commerce, TDAP and SMEDA, जिसके अंदर we trained these 4,300 people. So again, wonderful things that are happening on that part. उसके अलावा, initially I talked about के, we also gave out money, so in the form of ad credits and ad grants, right? So one of the things that we've done for Pakistan as well, we've managed to provide $5 million worth of ad credits, जिसके अंदर हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को इस पैंडेमिक के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए या सही इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए उनको ये फंडिंग भी प्रोवाइड की, और ये फंडिंग इस्तेमाल भी हो रही है ताकि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि इससे दूर कैसे रहना है, इससे अपने आप को बचाना कैसे है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में जितनी भी मैं बात करूं मेरे हिसाब से कम होगी। बहुत, एक तो ये कि दुनिया का 5वां सबसे लार्जेस्ट मुल्क, उसके अलावा यंग पॉपुलेशन, उसके अलावा इकोनॉमिकली भी ग्रो करता रहा है सालों के अंदर, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिलसिला है इज द यंग टैलेंट दैट वी हैव। अभी चेयरमैन साहब भी ये बात कर रहे थे कि जितने जो डेवलपर हैं उसके अंदर ज्यादातर डेवलपर्स आर लेस देन 35 years of age, which basically means a very young population which is involved in developing, and that basically means that the solutions that are being developed are more relevant and more up with the times in terms of what we provide or what is expected in the market. पाकिस्तान जो है ओपन सोर्स मार्केट के हवाले से 6th लार्जेस्ट है,
and it's the fourth largest market for freelancers, which is a huge thing. And this is one fact that we continue to talk about जब भी हमारी regional meetings होती हैं, and we talk about this as well. And this is a big opportunity for a country that we always talk about. And then this opportunity is also being recognized. अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 साल में तकरीबन $200 मिलियन रेज किए गए हैं स्टार्टअप्स ने, जिन्होंने अपने जबरदस्त आइडिया से नए नए पूरे बिजनेस डेवलप किए, और वो बिजनेस इतने इंटरेस्टिंग थे कि बहुत सारे लोगों ने उसकी फंडिंग भी की है. और इसी तरीके से बिकॉज ऑफ दिस गूगल का जो है बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट है टू डेवलप द कम्युनिटीज इन पाकिस्तान, बिकॉज वी डेफिनेटली सी एक तो यंग पॉपुलेशन है, हंग्री है टू लर्न, एंड देन और देन काम भी कर रही है बहुत सारे. तो विच इज व्हाई वी क्रिएटेड अ नंबर ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो पिछले साल के अंदर हमने तकरीबन 38,000 लोगों को ट्रेन किया है, और 2020 के अंदर अब तक हमने 21,000 लोगों को ट्रेन कर दिया है, जिसके जो itself is a huge accomplishment, and these are the people who are actually going to contribute and develop bigger ecosystems, and आप लोग इन लोगों का ही हिस्सा है, which is why there is a lot of hope and expectation tied to you. Some of the things that we've done recently as well, एक तो डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स था जो हमने 1-2 साल पहले अनाउंस किया था, अब उसका एक नया बैच आ रहा है, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी वाला एलिमेंट है वो एकेडमिक के एरिया के अंदर ही शुरू हो जाए. ये ना हो कि आप ग्रेजुएट करें अपनी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर आप डिजिटाइजेशन की जर्नी शुरू करें. हम चाहते हैं कि ये डेवलपर की जर्नी, डिजिटाइजेशन की जर्नी जो है वो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हो तो उस टाइम पे ही शुरू कर दें. एज अ रिजल्ट हमने बहुत सारे डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब के अंदर से बहुत सारे सक्सेसफुल किस्म के आइडियाज भी देखे, which I'll talk about in a little bit. The second thing is diversity and inclusiveness is also very important for us. हमारे मुल्क के अंदर खवातीन टेक मेकर्स आर जस्ट ट्रेमेंडस वर्क. लास्ट अभी हमने इस साल के अंदर ही तकरीबन 500 डेवलपर्स हैव participated in a physical and online event and doing some really great work, and it's really heartening and really proud for us to be able to be a part of these things. इसकी जो आई गेस रिजल्ट्स में अगर आप 2-3 चीजें देखें तो एक हमारा है गूगल का स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम इस साल के अंदर, जिसके अंदर 3 स्टार्टअप्स फॉर पाकिस्तान वर सिलेक्टेड, और ये 3 जो थे मैं अगर उसके ऊपर थोड़ा बैकग्राउंड दूं, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर से तकरीबन 600 एप्लीकेशंस आई थी, जिसके अंदर से 15 टॉप सेलेक्ट हुए थे, और उन 15 में से 3 जो थे वो पाकिस्तान से थे. सो इमेजिन द काइंड ऑफ स्केल एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क दैट्स कमिंग आउट फ्रॉम द कंट्री, एंड वी आर रियली प्राउड. द सेकंड थिंग इज वंडर ट्री, एक बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 1200 projects के अंदर it was one of the few 11 projects that was selected globally to be a part of that the small select group of people जिनको mentorship मिली, technical assistance मिली, business challenges को किस तरह deal करते हैं ताकि ये scale up कर सकें. So a round of applause to everyone who's been involved in it, whether it's Wali, whether it's Sehat Kani, Dev Talk, and whether it's Wonder Tree from Pakistan. ये आज जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, ये जो है हमारी आई थिंक पहली कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी है. आइडियली अगर हम वहां होते तो और भी अच्छा होता, लेकिन ये कि दिस इज आवर फर्स्ट सेरेमनी वेयर वी आर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट these wonderful people, all of you guys who have managed to graduate using the self-study program, or all these wonderful platforms that we've used. So very proud, very happy, and I know we're going to go through details of some of this in a minute. Just to kind of give you a big overall idea, there were about 5,000 developers who were registered, जिसके अंदर 13 शहरों में से पाकिस्तान के थे, और about 350 लोगों ने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया. And I know most of you are either here today or are probably going to be able to watch this later. And just in terms of the number of hours that you spent, it's about 22,000 hours that has been spent understanding this. In itself, it's such a big number कि इसके बाद there's a lot of wonderful future elements that you guys can work on. So thank you so much for being so active and contributing. And then we have some wonderful comments from a few people. So अगर तमसील से मैं की बात करूं, तो I am a student of FSC second year. CloudSeekho initiative helped me a lot to make use of my free time during lockdown and learn Google Cloud platform and technology. I'm so much fascinated to learn how Google Cloud platform works and very happy to learn it. Kindly bring me such initiatives, bring more initiatives in the future. Absolutely, Tamsil. We are also very excited and very happy that you were able to experience this and make the most of it as well.
शोएब अहमद साहब जो हैं उन्होंने भी अपना कमेंट दिया. दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग अबाउट अ क्लाउड प्लेटफॉर्म. आई एम इम्प्रेस्ड हाउ simple the labs were made, and I'm hopeful I can use these skills in my future job roles. Absolutely, that is the idea, to simplify, to make sure everybody is able to learn this and understand this. And whether you want to start up your own business or become part of a existing company or a business, the idea is that it's supposed to benefit and give you some more value. And I'm very, very proud to announce that we are also going to, because of the wonderful success आप लोगों ने जो हमें दिखाया है, उसकी वजह से we are also going to do a season 2. And that is tremendous. And I hope to see even more participation, and even a bigger event. And now with this virtual world that we're in, it's a chance for everybody to learn this. And this is really the future. Just to kind of summarize all the wonderful things that we've done in Pakistan as part of our communities, we have the Google developer groups, we have our experts, we have our developer students club, women tech makers, and we have the grow with Google, जिसके अंदर आपको बहुत सारी information मिल सकती है, और we have Google for startups, जिसके अंदर से a number of these wonderful winners have come out. Thank you very much. I wish you all the best in the future. It has been wonderful to to hear from some of you guys. It has been wonderful for you guys to be able to participate this. I can continue to hope that we continue to make this bigger and bigger, and you make us prouder and prouder. Thank you so much. Khuda Hafiz. अभी तक जो हमने बात की वो थी अबाउट अंडरस्टैंडिंग द गूगल इकोसिस्टम इन पाकिस्तान, और अब हम जा रहे हैं हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज की तरफ, जो कि हमारे साथ हैं मुबशरा और अहमद. इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट दे आर डूइंग, कैसे ये अपने आप को इस प्रोग्राम में सक्सेस पा रहे हैं. तो लेट मी जस्ट ऐड मुबशरा एंड अहमद क्विकली. जबरदस्त. सो आई थिंक अहमद का थोड़ा सा कनेक्टिविटी का कोई इशू हो रहा है, बट मीनवाइल हम मुबशरा से पूछ लेते हैं, बल्कि अहमद भी लगता है आ गए हैं. ऐड हिम. तो आप दोनों से क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन मेरा है कि कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल अस अबाउट आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे क्लाउड से सीख रहे हैं. सो प्लीज स्टार्ट विद इंट्रोडक्शंस. Assalamu alaikum everyone, and first of all thank you so much for recognizing my efforts and inviting me in this amazing virtual graduation ceremony. And let's introduce myself. This is Mubashira Wali from Karachi. I've just completed my last semester in computer science from Dadabhai Institute of Higher Education, and I'm a data science enthusiast who loves data. To be among such high esteemed guests. Well, I'm Raja Ahmed from Abdabad, pursuing computer engineering from UET Peshawar, and currently it's my 4th semester. First and the foremost thing about me is that I am a tech evangelist, and a love for computing is unprecedented. एक्सेलेंट, थैंक यू फोक्स. मेरा जो दूसरा सवाल आपसे है आज के लिए वो ये है कि हमें बताइएगा व्हाई डिड यू जॉइन क्लाउड सीखो एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. Okay, well, I joined CloudSeekho because it is one of a kind competition that never happened before in Pakistan, and I was familiar with Google Cloud Platform before this competition, but I have never ever tried any lab so far. So it was a great opportunity for me to get a free monthly subscription and try as many lab and quiz as I can in a month. So, well, the amazing thing about Google Cloud Platform is, and the quick labs is, the environment was amazing. The environment of GCP was amazing, and there was no simulation. It was a real thing, basically. I participated because these types of competitions are very rare in our ecosystem. साथ ही आपको पता है कि मतलब हमारे जो टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम है ना, इसमें यानी खासकर जो क्लाउड सीखो की तरह के competitions हैं वो इंतहाई कम देखने को मिलते हैं. और due to my past interaction with cloud, I really
know the worth of cloud platforms, that these are way expensive for an individual to get a hands-on experience. So when CloudSeekho announced हुआ, so it was just a golden opportunity for me. एक्सेलेंट, थैंक यू फोक्स। मेरा आपसे आखिरी आज का सवाल और बड़ा ज़रूरी वो ये है कि व्हाट विल यू सजेस्ट टू योर स्टूडेंट पीयर्स कि अगर वो क्लाउड सीखना चाहते हैं तो वेयर एंड हाउ डू दे स्टार्ट? Okay, well, from my side is here's a tip from my side to help you start learning CloudSeekho. So first thing is you need to learn the basics of the cloud. For any cloud platform, you need to learn the basics of cloud. Then next, explore careers in the cloud and start learning the skills that help you succeed in your career related to cloud. And the final thing is to validate your expertise with associate or professional level certificates. So this is all from my side. Well, Saad bhai, I will brainstorm my peers regarding the fact that cloud computing is a cutting-edge technology, and in coming future, each and every enterprise will move towards cloud. तो इस वजह से यानी cloud computing जो है वो एक potential skill बन जाता है। और सबसे ज़्यादा जो यानी impacting factor है वो ये है कि those days were gone when local and shared hostings worked well, but today is the market of cloud computing. So it's a must-do job for a developer or a computer science undergraduate student. That's it. And I was recently selected as a developer student club lead at my campus. And now I have decided to arrange a Cloud Fest at my campus, UT Peshawar, soon when the things get in order. That's all. Excellent. Thank you, Mubashira. Thank you, Ahmed. Have a great day. Or thank you so much for sharing your insights on this. So good luck for the rest and good luck for next learning opportunities. So next up, अभी तक हमने सुना different हमारी success stories के बारे में, program के बारे में. Next up, we have Yousaf Mirza, who's a customer engineer at Google Cloud. I think this is one of the sessions that I've been waiting for a lot because I want to know कि यार Google Cloud में क्या-क्या opportunities हैं, कौन-कौन से career paths हैं. So over to you, Yousaf. Thank you, Saad. Assalamu alaikum, everybody. Welcome to the CloudSeekho program. I think so बहुत a difficult task दिया गया मुझे to give a career advice to the young generation. हर एक में अपनी qualities होती हैं, अपनी capabilities होती हैं, and they grow on their own pace, right? जैसे अभी मुबशरा और राजा अहमद कह रहे थे, these are quite inspiring stories, right? They started learning about cloud. So I'll talk about today a bit of the history जैसे Google start हुआ, क्योंकि Google भी एक startup थी, उसमें क्या-क्या skills required थी, कैसे over time Google ने build किया, फिर Google Cloud कैसे evolution में आया, and then I'll give you some advice, a flow chart maybe that you can take practically over time, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी job skills required हैं in the market right now, जिनकी demand है Google के अंदर भी और जो companies Google Cloud को use करती हैं उन सब के लिए. A bit about my background. मेरी सारी education पाकिस्तान से है. Most of my career I've spent in Pakistan. Initially, I started as a software developer, a software engineer. Then I got to work in the data field. मैंने as a data analyst start किया in a telecom. उसके बाद data engineer, data scientist. So ये मेरी career progression रही है. Then ultimately I joined Google as a customer engineer. काफी exciting job है. I get to work with quite a lot of companies. उनकी problems को सुनते हैं हम और उनको हेल्प करते हैं कैसे आप सॉल्यूशंस डिप्लॉय कर सकते हैं इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज एट अ लार्जर स्केल, ग्लोबल स्केल पे भी. डिफरेंट टेलीकॉम्स, बैंक, स्टार्टअप्स, वेब होस्टिंग कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं. तो वी ट्राई टू सॉल्व दैट एंड विद द टेक्नोलॉजी विच वी हैव. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड. जब गूगल की बात आती है एवरीबडी इज फेमिलियर विद दिस पेज, राइट? आपने लाइफ में कभी ना कभी इस पेज पे तो गए होंगे. सो दिस इज व्हाट आवर एंड यूजर्स सी एज अ कंपनी. हम जब काम कर रहे होते हैं, हमारा एंड प्रोडक्ट, दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच एवरीबडी थिंक्स कि गूगल इज अ सर्च इंजन, बट गूगल इज मच मोर देन दैट. एज एन इंजीनियर हम जब देखते हैं इस पेज को तो वी सी इट अ बिट डिफरेंटली. हमारे लिए इन द बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा सर्वर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया, उसको मेंटेन करना, उसकी इम्प्रूवमेंट्स, उसमें नई ट्वीक्स ऐड करना टू मेक यूज़र एक्सपीरियंस मच बेटर फॉर यू.
आपको शायद पता होगा, दुनिया में कहीं पे भी किसी ने इंटरनेट कनेक्शन टेस्ट करना होता, द फर्स्ट थिंग दे चेक इज दे गो टू google.com, राइट? वो चेक करते हैं कि क्या गूगल की वेबसाइट एक्सेसिबल है कि नहीं है. दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस कि यस, देयर इंटरनेट कनेक्शन इज वर्किंग. सो दिस मीन्स देयर इज एन ऑलवेज ऑन सर्विस रनिंग, विच इज नॉट ईजी टू मेंटेन फॉर सच अ लार्ज ऑडियंस. पूरी दुनिया उसको हर वक्त एक्सेस कर रही होती है. सो एज एन इंजीनियर हमारे लिए ये पेज एज ए डिफरेंट एंगल से हम इसको देखते हैं. हमारे लिए पीछे सर्वर्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, जिसका मैं थोड़ा सा आज आपको बताऊंगा भी कि गूगल में किस तरह के हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और आपके लिए क्लाउड में वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जिनको आप लर्न करके अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं. सो जैसे हर एक कोई स्टार्ट करता है, गूगल ने भी एज आपने स्टोरी सुनी होगी, गूगल ने एक बहुत स्मॉल गैराज से स्टार्ट किया था, राइट? बट हम यहाँ पे क्योंकि क्लाउड की बात कर रहे हैं, तो जब गूगल ने अपना पहला कोड लिखा और उसको कुछ सर्वर्स चाहिए थे, कुछ बैंडविड्थ चाहिए थी ताकि उसको दुनिया एक्सेस कर सके. सो ये उसका पहला परचेज ऑर्डर आप कह सकते हैं कंपनीज में होता है कि जब उन्होंने कहीं पे थोड़ी सी बैंडविड्थ ली थी एक डेटा सेंटर के अंदर और कुछ सर्वर्स लिए थे जहां पे वो अपना कोड डिप्लॉय कर सके. बिफोर द क्लाउड हर एक को अपना सर्वर्स खरीदने पड़ते थे, उनको मैनेज करना पड़ता था, तो उनकी नेटवर्किंग करनी है, उनकी सिक्योरिटी करनी है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है. तो ये गूगल की एक बहुत हम्बल बिगिनिंग थी, जिसमें 1998 में सबसे पहले लैरी और सर्गे ने अपने कुछ सर्वर्स ऑर्डर किए थे, जिसके ऊपर वो पहला गूगल का अपना सॉफ्टवेयर होस्ट कर सकते थे फॉर देम टू गेट स्टार्टेड. बट आफ्टर दैट गूगल हैज ग्रोन क्वाइट अ लॉट. अब दे आर लाइक मैनी प्रोडक्ट्स, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं गूगल की, जो उसमें से आप कुछ यूज़ करते होंगे. अगर आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड है, यूट्यूब जिस पे हम अभी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैप्स है, जीमेल है, गूगल सर्च है, फोटोज़ है, ड्राइव है, प्ले स्टोर है, ये सारी सर्विसेज आर इन एडिशन टू गूगल सर्च, राइट? आप इन सब को यूज़ करते हैं, और इन सब सर्विसेज में ऑलमोस्ट every month more than 1 billion users active होते हैं. बल्कि after this COVID situation some of the services have even gone more than 2 billion right now. So इतनी ज़्यादा services को maintain रखना और active रखना all the time, उनकी lights up and running रखना is not an easy task. So I'll give you a little bit background कि इसके background में गूगल ने क्या develop किया, क्या किस जर्नी के थ्रू जाना पड़ा. एज अ स्टूडेंट आप लोग भी अभी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज लर्न कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हैं, तो उनसे आई विल ट्राई टू रिलेट कि वो जो आप कोर्सेज पढ़ते हैं वो कैसे इन सारे प्रिंसिपल्स में अप्लाई होते हैं और इन सॉफ्टवेयर डेवलप करने में उन्होंने हेल्प किया. सो दिस इज काइंड ऑफ अ टाइमलाइन, a little bit of history. इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. जब गूगल ने सबसे पहले अपना सर्च इंडेक्स लिखने की कोशिश की, आपने काफ़ी उसका फेमस सुना होगा, सर्च एल्गोरिदम गूगल का काफ़ी फेमस है. बट उसको डिप्लॉय करने के लिए जब गूगल ने पहला इंडेक्स किया इंटरनेट, सो द साइज ऑफ द डेटा, इफ यू कैन गेस, वाज वेरी वेरी ह्यूज. वो तकरीबन 1 पेटाबाइट का साइज का था. एट दैट टाइम देयर वाज नो डेटाबेस, नो सॉफ्टवेयर आउट देयर इन द मार्केट जो उस साइज ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता और इवन प्रोसेस कर सकता. सो यूजुअली हम जब अब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, हम जाते हैं, देखते हैं मार्केट में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, कोई मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. गूगल ने भी डिफरेंट डेटाबेसेस ट्राई किए, डिफरेंट फाइल सिस्टम ट्राई किया, बट इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज एट दैट टाइम कोई इतने बड़े लार्ज स्केल पे गया नहीं था. सो गूगल हैड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और उसको सबसे पहले स्टोर करने के लिए नया एक फाइल सिस्टम लिखना पड़ा, विच वॉज कॉल्ड गूगल फाइल सिस्टम. फिर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ा जिसको इंटरनली हम बॉग कहते हैं, और उसके ऊपर फिर एक प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क बनाना पड़ा, मैप रिड्यूस. द रीजन आई एम टेलिंग यू अबाउट ये सॉफ्टवेयर दोबारा फ्रॉम स्क्रैच लिखने पड़े, ऐसा नहीं है कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, लिनक्स था, विंडोज थी, और फाइल सिस्टम नहीं थे, फाइल सिस्टम भी थे, प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स भी थे, बट दे वर नॉट एबल टू स्केल एट द लेवल जिस पे गूगल ऑपरेट करना चाह रहा था. बट द कोर थिंग ये थी कि एट दैट टाइम गूगल हायर्ड सम वेरी स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मैथमेटिशियंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स नेटवर्किंग के और ओएस के बहुत अच्छी तरह समझते थे. उन्होंने अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग किया और वहाँ पे ले डाउन किए कुछ प्रिंसिपल्स जो अगर आप उनके ऊपर पढ़ना चाहते हैं मजीद, तो ये रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, यू कैन सर्च देम. और ओवर टाइम काफ़ी लोगों ने जब देखा कि अच्छा गूगल हैज़ गॉन थ्रू दिस प्रॉब्लम, तब तक काफ़ी कंपनीज उस प्रॉब्लम तक पहुंची नहीं थी. कुछ दुनिया में लोगों ने उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ा और उनको देखा कि ओके दिस इज अ न्यू वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया ओपन सोर्स के अंदर.
सो अगर आजकल आप बिग डेटा की बात करते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा फेमस टर्म है ये, काफ़ी कंपनीज को यूज़ करने की कोशिश करती हैं, तो हडूप वहाँ से बना, which was technically an open source implementation of Google file system and MapReduce, right? ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरनली गूगल पिछले 10-15 सालों से यूज कर रहा है इंटरनली। गूगल का अपना डेटा वेयर हाउस है। ऑल दीज टेक्नोलॉजीज, जब हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मैं लॉन्ग टाइम अगो जब मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वी सॉ दैट ओके गूगल इज इनोवेटिंग। जब तब हम सिर्फ सुनते थे कि ये रिसर्च पेपर है, बट हमें हमेशा तजस्सुस होता था कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जो उसका आउटपुट में होगा। बट आप लोग आर इन अ वेरी लकी टाइम में हैं जिसमें गूगल ने all those products internally जो Google use करता है, now we have packaged them in a very simple interface as a cloud platform and made the same software available, yes with a different name. हम internally उसको कुछ और कहते हैं, आप बाहर के लोगों को उसका समझने के लिए काफ़ी इजी कर दिया गया है। जैसे गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिक प्रिंसिपल है बॉग पे था, बट उसका नाम बॉग किसी वजह से रखा गया था, बट उसको आप बाहर की दुनिया में आप कुबरनेटिस इंजन, डॉकर्स, कंटेनर्स के नाम से जाना जाता है। गूगल का जो डेटा वेयर हाउस है इंटरनली उसको ड्रमल कहते हैं, जिसपे सारा डेटा स्टोर है, एनालाइज करते हैं सब कुछ ताकि हम उसको प्रॉपर्ली सर्व कर सकें। बिग क्वेरी जो काफ़ी कंपनीज यूज कर सकें। तो यू आर गाइज इन अ वेरी गुड स्टेट टू यूज ऑल दोज टेक्नोलॉजीज। आई रिमेंबर जब मैं पढ़ रहा होता था, एट दैट टाइम इफ यू हैव टू गेट सम एक्सेस टू अ वेरी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, या तो हमें लैब की एक्सेस लेनी पड़ती थी, या वो कोर्स रजिस्टर करना पड़ता था जिसमें हमें कभी डेवलपर या स्टूडेंट एडिशन मिल जाता था, या जितना हमारा उस वक्त डेस्कटॉप पीसी पेंटियम प्रोसेसर जितना परफॉर्मेंस हैंडल कर सकता था, हम वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे। बट नाउ विद क्लाउड यू कैन गो एंड टेस्ट द सेम सॉफ्टवेयर जो एंटरप्राइज कंपनीज यूज करती हैं, टेलकोस, बैंक्स, इवन गूगल खुद यूज करता है। यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग योर एप्लीकेशंस ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, राइट? और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी जो सबसे फेमस मशीन लर्निंग एआई की आजकल काफी जगह बात होती है इनोवेशन की, तो गूगल ने अपनी वो भी लाइब्रेरी ओपन सोर्स कर दी टेंसरफ्लो के नाम से। सो यू कैन गो एंड टेस्ट आउट ऑल दोज थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड। इवन जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, आप हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं, राइट? बट नाउ यू कैन डिप्लॉय कटिंग एज प्रोडक्शन लेवल सॉफ्टवेयर्स जिसमें आपका अपनी स्टार्टअप आ सकती है। जब आप किसी जॉब पे जाते हैं, यूजुअली जब आप अपने यूनिवर्सिटी में होते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर सीख रहे होते हैं, आपके पास डिफरेंट इंटरफेस होता है। जब आप जॉब में जाते हैं, वहां पे एक डिफरेंट इंटरफेस होता है बिकॉज इट्स रनिंग एट अ डिफरेंट स्केल, राइट? बट विद द क्लाउड इट्स द सेम एक्सपीरियंस। जो आप अभी लर्न करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू ऑल दिस लर्निंग, यू विल हैव द सेम एक्सपीरियंस, बट द ओनली डिफरेंस विल बी इट विल बी अ मच लार्जर स्केल। सो आपके लिए ये सारा कुछ पैकेज किया गया गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके अंदर सिंपल वर्चुअल मशीन से लेके एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक डेटाबेसेस, डेटा वेयर हाउसेज, कुबरनेटिस इंजन, मशीन लर्निंग, एआई टेक्नोलॉजीज। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कि कुछ कंपनीज ने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कैसे अपने एप्लीकेशंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। जस्ट टू गिव यू अ फीलर कि क्यों इंपॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? इस वक्त दुनिया में बहुत सा डेटा जनरेट होता है। आप हर एक के पास आजकल ऑलमोस्ट स्मार्टफोन्स हैं, किसी न किसी की तरफ की स्मार्ट डिवाइस है, वॉच स्मार्ट होगी, लैपटॉप्स होंगे, सर्वर्स रन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डेटा जनरेट हो रहा है। सो दिस वाज एन इंडिपेंडेंट स्टडी डन बाय अ कंपनी आईडीसी, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया बाय 2025 विल बी जनरेटिंग 163 अमाउंट ऑफ जेटाबाइट्स ऑफ डेटा। आपने टेराबाइट का सुना है, गीगाबाइट का सुना है, पेटाबाइट की भी मैंने बात की, गूगल का पहला था। ये उससे भी कई लेवल आता है। इट माइट बी एन एक्सरसाइज फॉर यू टू फिगर आउट कि इसमें कितने जीरोज होते हैं इन 1 जेटाबाइट। सो इफ सो मच डेटा इज बीइंग जनरेटेड, राइट? सो कंपनीज को स्किल सेट चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए इन द मार्केट ताकि वो उस डेटा को कलेक्ट कर सकें। यस, एक कंपनी इतना डेटा नहीं जनरेट करी, बट काफ़ी कंपनीज उसको मिला के इतना डेटा जनरेट करी है, एंड एवरी कंपनी इज एट अ डिफरेंट लेवल और उनको डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल सेट चाहिए। सो इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द क्लाउड राइट नाउ एंड डेवलप योर स्किल्स, डेफिनेटली यू विल बी वेल सूटेड फॉर द मार्केट। सो एग्जाम्पल, क्योंकि आज स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है और स्टूडेंट लाइफ में सब कोई ना कोई गेमिंग, कोई ना कोई हर एक अपनी पसंदीदा गेम होती है, राइट? सो दिस इज़ अ गेम पोकेमॉन गो, आप में से शायद कुछ लोगों ने देखी भी हो, खेली भी हो, जिसमें उनका आइडिया था कि कुछ जानवर को आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में, रियल एनवायरनमेंट में जाके वर्चुअल जानवर को कलेक्ट करना है। तो जब इन डेवलपर्स ने सबसे पहले डिप्लॉय किया गूगल क्लाउड के ऊपर, राइट, तो उनके जहन में था अच्छा हमने अभी डिप्लॉय किया, कितने लोग इसके ऊपर आ जाएंगे? मे बी 1 टाइम, 1000, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स। उन्होंने अपनी कुछ एस्टिमेशन की और दे डिप्लॉयड द सॉफ्टवेयर, राइट?
दे वेंट होम, उन्होंने मॉनिटरिंग करी, बट दे डिड नॉट नो दैट इतनी वायरल होगी ये गेम कि विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, राइट, ये 50 टाइम इसकी डिमांड बढ़ गई. नाउ द थिंग इज कि अगर आप ट्रेडिशनल वे से अगर इस पे काम कर रहे होते तो देन दिस गेम वुड हैव बीन डाउन. इसकी वेबसाइट, इसकी एप्लीकेशन काफी लोगों को एक्सेसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि जब इतनी ज्यादा डिमांड आ जाए तो नेटवर्क चोक हो जाता है, सिस्टम्स चोक हो जाते हैं, उनका सॉफ्टवेयर स्केल नहीं कर सकता. बट चूंकि ये गूगल क्लाउड पर रन करी थी, उसमें उसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छी तरह प्लान किया गया था. ऑल्दो द कोड वाज रिटन कि वो आज 1x 2x पे भी जा सकता है, बट सॉफ्टवेयर इन द बैकग्राउंड वाज सो इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट एनफ कि जब बैंडविड्थ और ट्रैफिक 50x भी हुई, ऑटोमेटिकली वो स्केल कर गई. सो देयर वाज नो डाउन टाइम, जिसकी वजह से ये गेम बहुत पॉपुलर हो गई. अगर ये गेम नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से डिप्लॉय की जाती, वो काफी लोगों को एक्सेस नहीं होती, दे वुड हैव हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. वो कहते हैं तो गेम चल ही नहीं रही, फिर शायद ये इतनी फेमस नहीं होती. सो द ओनली थिंग विच आई एम सेइंग इज कॉन्सेप्ट अच्छा था, इम्प्लीमेंटेशंस अच्छी थी, अल्टीमेटली विच रिजल्टेड इन देयर सक्सेस, राइट, गूगल में क्लाउड में इंप्लीमेंट करने से. इसी तरह आप लोग आजकल जो भी एप्स डिप्लॉय करते हैं, यू कैन इजीली डिप्लॉय इन क्लाउड, जिसके ऊपर आपके पास पूरी दुनिया की एक्सेस होती है. अनदर एग्जांपल, वेरी सिंपल वन, इसमें ये एक एग्जांपल है, सिंगापुर में इनकी नेशनल लाइब्रेरी थी, उनके पास पूरी हिस्ट्री थी सिंगापुर की, जब से बना है उनकी सारी तस्वीरें थी, ब्लैक एंड वाइट थी. तो उन्होंने कहा कि लेट्स डिजिटाइज देम, पहले इनको डिजिटल करते हैं, फिर दे वांटेड टू पुट कलर इनटू इट, राइट. और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है इफ यू वांट टू कलराइज मैनुअली एक एक तस्वीर को लेके और उसको कलर करना और उसको प्रॉपर लाइक लेके आना, और हर एक डिफरेंटली कलर करता है. सो दे थॉट ओके, मशीन लर्निंग है, दे आर एपीआईज गूगल क्लाउड के अंदर है, तो हम इसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं विद द लीस्ट एफर्ट. यस, थोड़ा पावर, ग्रैंड पावर लगेगा ऑफ कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज, बट इसको हम कैसे कलर लेके आ सकते हैं. सो दे वर एबल टू कम अप विद अ वेरी नाइस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जिसमें दे वर एबल टू कलराइज द होल लाइब्रेरी. सो अगर आप आउटपुट देखें ब्लैक एंड व्हाइट में, यस यू गेट द हिस्ट्री, राइट, बट इफ यू सी द सेम पिक्चर इन कलर, राइट, it totally gives you a different perspective. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है. So they were able to do it very easily and at a very cost efficient manner at a very large scale. ये कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाह रहा था कि कुछ एप्लीकेशंस जो डेवलप की गई. सो क्लाउड की वजह से आप अपनी एप्लीकेशन को ग्लोबल रीच में लेके जा सकते हैं विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स. आपको, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने आपकी ऑडियंस यूएस में है, यूरोप में है, गल्फ में है, एशिया में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी है, you can connect to them instantly. You can migrate your applications. पहले होता यह था कि you had to communicate, वहाँ पे local servers खरीदने पड़ते थे, deploy करना पड़ता था, काफी complex setup है networking का. But with Google Cloud, within a matter of few minutes, you can deploy all these applications, right? अब I will talk about the demand of cloud, right? Going forward, ये कुछ सर्वेज हैं जो डिफरेंट कंपनीज ने किए. गार्टनर आईटी के वर्ल्ड के अंदर बहुत मानी हुई एक एनालिस्ट फर्म है जो एनालिसिस करती है कि क्या डिमांड है. तो उन्होंने एनालिसिस किया था कि बाय 2020, जो अभी ये साल है, देयर वुड बी लाइक $1 ट्रिलियन ऑफ स्पेंडिंग इन आईटी, राइट, कि काफी कंपनीज उसके ऊपर स्पेंड कर रही हैं क्लाउड में मूव करने के लिए, राइट. वो चाह रही हैं कि हम जो ट्रेडिशनली अपने पास सर्वर्स रखते हैं, उनकी मैनेजमेंट रखना, तो हम उसको मॉडर्नाइज करके क्लाउड में मूव करें, विच शोज यू दैट देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ डिमांड इन एवरी सेक्टर, एवरी जॉब मार्केट, जहां पे वो चाह रहे हैं कि हमें क्लाउड की स्किल्स के लोग मिलें. फिर कैपजेमिनी ने इसी तरह की एक स्टडी की जिसमें उन्होंने देखा कि बिजनेस की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है इनोवेट करके. क्लाउड में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज हैं, यू आर नॉट लिमिटेड बाय वन सॉफ्टवेयर, राइट. जब आप एक मशीन खरीदते हैं, आप उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, बट क्लाउड में यू गेट द एजिलिटी. आप आज एक सॉफ्टवेयर पे काम करें, यू कैन मूव टू अनदर, ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, कंबाइन करके आप अपने एप्लीकेशन को काफ़ी मॉडर्नाइज कर सकते हैं. और जब मैंने डेटा की बात की कि इतना ज़्यादा डेटा जनरेट होगा, तो वन ऑफ द की फील्ड्स विच इज़ वेरी हाईलाइटेड दीज डेज इज डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, क्योंकि डेटा हर जगह से आ रहा है, हर चीज़ के बैकग्राउंड में डेटा चल रहा होता है, राइट. सो उसमें आपको कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करना, उसको आपने इंसाइट्स जनरेट करनी. सो डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डिमांड में है एज अ फील्ड फॉर जॉब्स, राइट. सो आपको for the cloud you get a very solid foundation. Google खुद उस पे चल रहा है, so we try to do it. उसके ऊपर काफी दुनिया रिलाई कर रही होती है, and you get a serverless platform. आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैंने कितने सर्वर्स डेवलप करने हैं, कितना स्टोरेज लेनी है, ऑटोमेटिकली सिस्टम इन द बैकग्राउंड स्केल करता है. The only thing which we ask you to do is to come up with the logic. जो आपने बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, उसका आप कोड लिखें, उसकी आप एप्लीकेशन डेवलप करें, उसका आप सॉफ्टवेयर लिखें, जो भी है, जस्ट फोकस ऑन द बिजनेस प्रॉब्लम.
बाकी सिस्टम को खुद हैंडल कर लेना चाहिए कि वो ग्रो करिए। जैसे मैंने आपको पोकेमॉन गो की एग्जांपल दी, राइट, और कलराइज्ड.sg की एग्जांपल दी। तो अगर आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर लेंगे, देन द एप्लीकेशन वुड वर्क सीमलेसली फॉर एनी काइंड ऑफ ऑडियंस। अब जीसीपी के अंदर क्या ऐसी खसूसियात हैं, क्या बेनिफिट्स हैं विच कैन रियली हेल्प यू एक्सेलरेट योर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस? काफ़ी हमने सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स कर दिए हैं। अगर आप डेटा पाइपलाइंस की बात करें, हमारा एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ कॉल्ड बीम। टेंसरफ्लो मशीन लर्निंग वाले लोग जो इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ वेरी नोन लाइब्रेरी फॉर इमेज प्रोसेसिंग और इवन नॉर्मल डेटा साइंस एप्लीकेशंस आल्सो। कुबरनेटिस विच इज़ लाइक द फ्रेमवर्क फॉर डॉकर्स एंड कंटेनर्स, राइट। इसी तरह वी ट्राई टू मेक इट सिंपल, जैसे हमारे भी स्टूडेंट्स ने भी कहा, इट्स अ वेरी सिंपल इंटरफेस टू यूज, राइट, वेरी इजी टू अडॉप्ट, राइट। एंड द थिंग इज काफ़ी ज़्यादा लर्निंग एक्सपोजर्स हैं। आई विल टॉक अबाउट ऑल दिस जर्नी कि आप कैसे कैसे सीख सकते हैं डिफरेंट। हमारे पास इन पर्सन ट्रेनिंग्स भी होती हैं, ऑनलाइन भी हैं, डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, कोर्सेरा पे हैं, खान अकेडमी पे हैं। ऑल दीज आर अवेलेबल टू यू, सम आर फ्री, सम आर पेड डेफिनेटली, बट आप उन पे रिलाई करके अपना करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। एंड द गुड थिंग इज कि इट्स ऑल सिक्योर जो भी आप अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, और इट्स स्केलेबल, राइट। जब गूगल क्लाउड खुद बिलियंस ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर रहा है, देन डेफिनेटली इट विल बी एबल टू सपोर्ट द एप्लीकेशन विच यू आर गोइंग टू पुट ऑन इट। Now let's talk about the main topic, जिसकी I'll try to give some advice. I'll try to lay out some path for you guys. Everybody has their own preference, every skill set. They can choose their own path, right? So the question is, how do you get started with cloud, right? कौन सी ऐसी jobs available हैं market के अंदर जिसको आप skill set को सीख के गूगल क्लाउड का हिस्सा बन सकते हैं, या जो भी कंपनी जो क्लाउड को अडॉप्ट करना चाह रही है। देयर every company in the world right now is going through that transformation, digital transformation, right? अभी कोविड कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपनीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की के जर्नी से गुजर रही हैं, जहाँ पे उनकी सारी वर्कफोर्स रिमोटली बैठी है। सो दे नीड दोज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जहाँ पे वो उनको इनेबल कर सकें सीमलेसली काम करने में, जहाँ पे उनको हर वक्त रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ऑफिस में आके अपने सिस्टम से लॉग इन होंगे तो आप सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। सो बट द कोर थिंग इज, आप लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दैट्स द फाउंडेशन, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स, आई विल शो यू लेटर कैसे वो इम्प्लीमेंट होते हैं, सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स, डेटाबेसेस के, प्रोग्रामिंग के। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि अच्छा जी, टेल मी वन स्किल सेट विच आई शुड लर्न टू मेक मी यूजफुल इन द जॉब, राइट। ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि जिसका आप कह दें कि ये एक बहुत ज़्यादा डिमांड में है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन डिमांड, राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम सिर्फ बात करें। बट द थिंग इज, जो भी आप सीख रहे हैं उसको आप इतने अच्छे तरीके से सीखें कि आपको जो भी प्रॉब्लम दे दी जाए आप उसको सॉल्व कर सकें। नई लैंग्वेज सीखना, जावा है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, डॉट नेट है, वटेवर, और अभी आपकी तो काफ़ी ज़्यादा एंड्रॉयड के लिए और iOS के लिए भी लैंग्वेजेस आ चुकी हुई हैं मोबाइल ऐप्स डेवलप करने के लिए। दैट्स जस्ट सिंटैक्स। वो आप इतने स्मार्ट हैं कि वो आप कभी भी लर्न कर सकते हैं, राइट। जब मैंने अपना यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी, माई फर्स्ट लैंग्वेज वॉज पास्कल, वो अभी है भी नहीं। सी प्लस प्लस असेंबली सीखी थी, बट ओवर टाइम ये बात नहीं कि हमने जावा नहीं सीखी, डॉट नेट नहीं सीखी। ये इस फील्ड में आपको कंटिन्यूसली इवॉल्व करना पड़ता है, नए कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं। बट इफ़ यू गो थ्रू योर फाउंडेशन स्ट्रांगली, और अगर आप उस पर अच्छी तरह अपने आप को समझते हैं, तो लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स विल बी रिलेटिवली ईजी। एंड देन आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्किल्स के अंदर। वो फिर आप जॉब के अंदर जब आप जाते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज आपके पास आते हैं, देन यू अप्लाई ऑल दोज प्रिंसिपल्स जो आपने सीखे हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले गूगल की एग्जांपल दी कि जब गूगल ने भी स्टार्ट किया, उनके पास भी वही प्रॉब्लम आया, राइट, कि उनके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं था। सो दे हैड टू गो टू बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और वही बेसिक प्रिंसिपल्स जो स्टैंडर्ड हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के, डेटाबेसिस के, फाइल सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, दे हैड टू ट्वीक इट, और उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ा इन अ डिफरेंट मैनर दैट सूट्स देयर पर्पस, राइट। सो आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अभी जैसे बात हो रही थी कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इन क्लाउड सीखो के प्रोग्राम में क्विक लैब्स स्टार्ट की है। क्विक लैब्स हमारा एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम एंड टू एंड एक्सपीरियंस देते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा लैब्स होती हैं, जाके उसमें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लैब्स कर सकते हैं। दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें एटलीस्ट यू गेट द फील के कौन कौन से आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आप एंड टू एंड एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे एक बुक के चैप्टर के अंदर एक्सरसाइजेज होते हैं, इट्स सिमिलर टू दैट बट मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव। जब आप वो कर लेते हैं, यू गेट अ फीलर, आपको थोड़ा सा आता है, बट देन यू वांट टू हैव दोज कॉन्सेप्ट्स रेडी, राइट, यू वांट टू गो इन डेप्थ।
आप चाहते हैं कि जब मैं किसी इंटरव्यू के लिए जाऊं, किसी से बात करूं, तो दे वुड थिंक मी एज एन अथॉरिटी, राइट? हम भी जब कस्टमर से आपके पास जाके बात करते हैं अपने, या जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे पास वो आते हैं एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, राइट? सो दे एक्सपेक्ट अस कि वी शुड नो आवर टेक्नोलॉजी रियली रियली वेल, कि वो हमसे अगर प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आ रहे हैं तो वी शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, राइट? तो उसके लिए ये सर्टिफिकेशन ट्रैक्स बनाए जाते हैं जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ याद करके जाना है और उसका जाके एग्जाम दे के आना है। उसमें अगर आपने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया हुआ, इसीलिए हम आपको पहले लैब्स करवाते हैं कि अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू जाएंगे तो यू विल बी इजीली एबल टू grasp and understand those concepts, ताकि आप उसको बाद में किसी को समझाना भी चाहें, लेमैन को इंटरव्यू के अंदर, और इंप्लीमेंट भी करना चाहे अपने जॉब के अंदर, वेरी इजीली कर सकते हैं। जब आप ये कर लेते हैं, सो दे कुड बी लाइक मल्टीपल पाथ्स। अल्टीमेटली यस, सबका गोल है कि उनको जॉब मिल जाए, दे वांट टू हैव अ वेरी गुड जॉब, इवन अपना स्टार्टअप कंपनी भी स्टार्ट करना चाहते हैं। बट टिल द टाइम, जो अभी लोग स्टिल अभी यूनिवर्सिटी में हैं, जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, देयर मेनी कॉम्पिटिशन्स आउट देयर। जैसे गूगल काफ़ी ज़्यादा अपने कॉम्पिटिशन्स होस्ट करता है केगल के ऊपर, जिसमें काफ़ी डेटा की प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी वेबसाइट्स हैं जिसमें वो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होस्ट करते हैं। यू कैन गो एंड टेस्ट योर स्किल्स, राइट? जो आप बुक में पढ़ते हैं, कोर्स में पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, वो उन कॉम्पिटिशन्स के थ्रू। इंटर्नशिप्स इज अ वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग स्टार्टेड, राइट? अल्टीमेटली द गोल इज टू लैंड इनटू योर जॉब और स्टार्ट योर ओन कंपनी। जैसे फरहान कह रहे थे, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, वो अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, डिपेंडिंग कि आप अपने किस स्टेज पे हैं अपनी लाइफ के। इन सबको जब कंबाइन किया जाता है तो ये काफ़ी इमर्सिव क्लाउड एक्सपीरियंस बन जाता है, जिसमें अभी बात की ऑलमोस्ट आपकी अप्लाइड लर्निंग आ जाती है, उन लैब्स के थ्रू आपका रोल बेस्ड लर्निंग आ जाती है, जो आई टॉक अबाउट। और जब आप जॉब्स में जाते हैं तो हमारे पास एक एडवांस किस्म की लर्निंग होती है विच वी ऑफर टू कंपनीज, जिसमें आप गूगल के इंजीनियर्स के साथ बैठ के कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिनका सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल है भी नहीं। तो उसकी वजह से ये फ़ायदा होता है कि आप उसको अपना नए किस्म के थॉट प्रोसेस को इन्वो कर सकते हैं। डेफिनेटली गेटिंग द सर्टिफिकेशन इज़ एन एडेड बेनिफिट। आपने सबने काफ़ी ज़्यादा आप इस लैब्स के थ्रू गए होंगे। देयर डिफरेंट काइंड ऑफ लैब्स। जीसीपी की बेसिक लैब्स हैं, डेटा के ऊपर हैं, आर्किटेक्चर, आपने डेवलपमेंट कैसे करनी है, सिक्योरिटी पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ऑल दीज लैब्स आर देयर। डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट आप इनको ट्राई कर सकते हैं। नाउ दिस इज द क्रक्स विच आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू गाइज, राइट? कि कौन कौन से जॉब रोल्स फंक्शंस अवेलेबल हैं गूगल क्लाउड के अंदर, और जो कंपनीज भी देखती हैं, राइट? एट द टॉप इफ यू लुक, बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी कोई बिजनेस चला रही होती है, राइट? दे हैव टू सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम। अगर वो टेलको है तो उनका बिजनेस है टेलीकॉम का, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक्स का उनका अपना है, बट अंडरलाइन काफ़ी सिस्टम्स हैं। तो पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो बिजनेस हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं। इस तरह फिर क्लाउड के अंदर आपका आ जाता है आर्किटेक्चर को डेवलप करना, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट का है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किस किस की तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस चाहिए। डेटा का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे मैंने अपना बताया, स्टार्टेड एज अ डेटा एनालिस्ट, पे डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, राइट? ये काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं इन द मार्केट। इवन गूगल क्लाउड इनको सर्च करी होती है ऐसे रूट कि जो डेटा कलेक्ट होता है उनसे इनसाइट्स जनरेट करना, एंड टीम कोलैबोरेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अब काफ़ी लोग रिमोटली काम कर रहे हैं तो उनको कैसे इकट्ठे काम कर सकते हैं मिलके, और काफ़ी कुछ आप इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास जी स्वीट का है, जीमेल है, और ये जिसमें अब यूट्यूब है, काफ़ी कोलैबोरेशन के अंदर आ जाते हैं। तो ये सब कुछ एक क्लाउड का एक्सपीरियंस बनता है। अब these are good titles, बट इसके अंदर क्या क्या मजीद ड्रिल डाउन करें तो कौन कौन से आपके पास स्किल सेट्स आते हैं लर्न करने के लिए, और कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं। तो इफ़ यू लुक एट द बिजनेस डिसीजन मेकर, राइट, उन्होंने देखना है कि हम क्लाउड पे जाएंगे तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम कौन कौन सी जीसीपी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या आएगी, क्या वो रिलायबल है, क्या वो सिक्योर है, कंप्लाइंस के इश्यूज आ जाते हैं। सो ये काफ़ी कुछ प्लान करना पड़ता है। आर्किटेक्चर वाले आते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो कोर कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं इन द मिडल, राइट? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, राइट? डेटाबेस के, नेटवर्किंग के, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द जॉब कैटेगरीज, राइट? अगर आपके ये स्ट्रॉन्ग है तो देन यू कैन सक्सीड। यस, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बट दीज आर सम करियर पाथ्स जिसमें आप लेके जाके अपने आप को स्पेशलाइज कर सकते हैं टू लर्न मोर अबाउट ऑल दीज टेक्नोलॉजीज, राइट? उसमें आप नेटवर्किंग में जा सकते हैं, सिक्योरिटी में जा सकते हैं, एप्लीकेशन में डेवलपमेंट में जा सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे डेटा की बात हुई, डेटा में आप कैसे मशीन लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा पाइपलाइंस कैसे बनाई जा सकती हैं। ऑल दीज फील्ड्स आर आउट देयर, जिसमें अभी कंपनीज जॉब्स एडवर्टाइज कर रही हैं एंड दे वांट यू टू अप्लाई फॉर दीज रोल्स।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गूगल क्लाउड में काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं इन सब टेक्नोलॉजीज़ को हैंडल करने के लिए और इन डिफरेंट जॉब रोल्स को, सो आप उन पे जाके मजीद सीख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू रियली लाइक, अभी आप डिग्रीज कर रहे हैं, कोई बैचलर कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा होगा, राइट? अगर आप सर्टिफिकेशन भी कर लेते हैं, दैट गिव्स यू एन एडिशनल स्टैम्प व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, राइट? कि यस, जो आपका इंटरव्यू है, दे विल नो दैट यस दे हैव गॉन थ्रू अ वेरी रिगरस प्रोसेस टू गेट दैट सर्टिफिकेशन। इट्स नॉट एन ईजी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ रटा लगा के एग्जाम दे देंगे, यू विल गेट एन एग्जाम। यू हैव टू गो थ्रू कंटिन्यूस लर्निंग टू गेट दिस सर्टिफिकेशंस व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट, जिसमें क्लाउड आर्किटेक्ट आ गया, डेवलपर आ गया, इंजीनियर आ गया। सो आई वुड रिकमेंड आप अपनी लैब्स जिन लोगों ने नहीं की वो अपनी कंप्लीट करें, अपने बैजेस अर्न करें, नेक्स्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन पे जाएं और अपने आप को करियर रेडी करें। गो एंड ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इनोवेट करें। किसी ने स्टार्टअप बनानी है, किसी के पास कोई आइडिया अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का, सब कुछ कर सकते हैं। एक चीज मैं सिर्फ बताना चाहूंगा, इस वक्त यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। इस वक्त गूगल क्लाउड की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। सब चाहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस मिले कि कंपनीज कैसे इंप्लीमेंट करती हैं दुनिया में। वोडाफोन, स्पॉटिफाई, ट्विटर, बड़ी बड़ी कंपनीज इन सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करती हैं। तो अगर आप जाके यूट्यूब पर सर्च करें गूगल क्लाउड नेक्स्ट, उस पर डिफरेंट कंपनीज आके अपना बताती हैं कि हमने कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की एट अ वेरी लार्ज स्केल, which will give you a very good learning experience, right? Yes, टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई है, बट देन यू कैन रिलेट, अच्छा ट्विटर अपने अपना डेटा प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व की, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सेटअप किया, सिक्योरिटी ऐसे हैंडल की, स्पॉटिफाई कैसे करता है, HSBC ग्लोबल बैंक है वो कैसे करता है, अपने सारे बैंक्स को आपस में इंटरेक्ट करता है, वोडाफोन कैसे करता है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल देयर एक्सपीरियंसेस। उन्होंने AI कैसे इंप्लीमेंट की, बिजनेस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, एप्लीकेशंस कैसे डिप्लॉय की। ये सारे डिफरेंट ट्रैक्स हैं। दे आर लाइक मोर देन 300 टॉक्स अवेलेबल आउट देयर। इस साल की भी हैं, लास्ट ईयर की भी हैं। You can go and listen to all of those, which are really good, which will give you a global experience कि दुनिया में different companies कैसे काम करती हैं। So with that, I would like to give you a final note कि platform is still a platform. It's like a piece of paper, right? जो आपका idea, creativity है, is what you put on top of it. We are providing you the foundation of it. We are providing you the base for it, right? Paper or pencil is not the end. That's just the starting point. But आप उसको मिला के क्या एंड में प्रोडक्ट बनाते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, दैट्स वेयर वी वांट यू टू लीड, राइट? डेफिनेटली आप लोग सब क्लाउड सीखना शुरू कर दें, विच विल गिव यू अ वेरी बूस्ट। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Yousaf. That was the highlight for me because क्लाउड कैसे सीखते हैं, मेरे खुद एक मैं काफ़ी री एनर्जाइज हो गया हूँ और आई थिंक जो हमारे यंग स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी था। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सेशन। थैंक यू। एक्सेलेंट। सो दोस्तों, आज का हमारा साथ कुछ इतना ही था। दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मीट द डिफरेंट लीडर्स। स्पेशल थैंक्स टू द चेयरमैन PTA आमिर अजीम बाजवा, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया शुरू में ही, फिर फरहान और साथ यूसुफ, और जो सक्सेस स्टोरीज हैं हमारी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस। प्लीज आपसे वही रिक्वेस्ट है कि टेक्नोलॉजी को देखते रहें कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और लर्निंग की देयर आर काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली क्लाउड सीखो 2 सीजन 2 will be coming soon as well, तो प्लीज उसको देखते रहें एंड लेट्स लर्न टू बिल्ड। सो आई थिंक एक यंग लोगों के लिए जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि सीखने के साथ साथ हाउ कैन यू बिल्ड थिंग्स विच क्रिएट इम्पैक्ट, एंड दैट इज माई मैसेज फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान कि जैसे जैसे वो नई चीज़ें सीख रहे हैं, they should also learn the art of building amazing new things. And I hope that you think about this. With that note, we are going to end today's event. Thank you so much for joining. Good luck to all students. Good luck to everyone who joined us. और I hope कि आप हमारे क्लाउड सीखो के जर्नी में साथ रहें. I wish you all the best. Take care and Allah Hafiz.